So here I am again with chapter number 11, that is about transportation in animals and plants. So whatever we have done, we have discussed these things in the live class also, but still I am here with the same topic again, right? So the first thing we are going to learn in this chapter, that is about circulatory system. So first thing which we are thinking about, that what is a system, right? So when we are going in the flashback, we already know that our body has a structural unit, the functional and structural unit of our body, that is cell. After that, the group of cells are going to come together, and then it is tissue. Group of tissues are coming together, and then it is organ. So after that, the group of organs are coming together, and then it is going to form a system, and these kind of systems are coming together, and then they are forming your body, right? So there are various type of systems which we have learned in the first semester also. So we have talked about digestive system, we have talked about respiratory system. Then in this chapter we are going to talk about the excretory system also. There is a circulatory system. So there are the systems which are going to form your body, right? So getting the story about system, now we are going to learn circulatory system, right? So what is circulatory system and how it is going to help our body? So it helps to transport oxygen as well as food, water and minerals to all the part of the body. Like what it is actually doing, आपके body में जो भी खाना है, जो भी mineral है, talking about oxygen and water, these system are going to, like वो आपके body के सारे हिस्सों तक, they are going all the way to your body parts, right? वो सारे body parts तक सब चीज़ें पहुँचाती है. तो technically they are transporting food, oxygen, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचती है, राइट? Waste like carbon dioxide and urea are also removed from the body with the help of circulatory system. जब आपके बॉडी में अच्छी चीज़ें हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है, तो यही सर्कुलेटरी सिस्टम आपके बॉडी से जो गलत चीज़ें हैं, जो भी वेस्ट है, उसको भी बॉडी से बाहर निकालते हैं, राइट? सो इट इज रिटर्न दैट यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी सारे वेस्ट है, इट इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अबाउट द फूड यू आर ईटिंग, द अनडाइजेस्टेड फूड, यूरिया, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है. सो दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज गोइंग टू हेल्प टू किक आउट द वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी. Talking about the circulatory system in humans, so we already know that if we are talking about the digestive system and their organs, so we know that it starts from mouth and it is going to end in anus, right? So same as circulatory system has certain organs which are very important for the whole system, right? So the circulatory system in humans consists of organs. They are heart, blood and blood vessels. So you can see it is in the web chart that there is a circulatory system web chart, and the organs which are very important in this one. This is about heart, blood and blood vessels. So now we are going to see that in the blood vessels there are three types of blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. Okay, so first we are talking about blood vessels. So as we have seen that blood vessels are the part of circulatory systems. So let's see that what is blood vessels, right? So blood flows in the body through long tube-like pipes. It's like a pipe structure which is there in your house, right? So the blood flows in the whole body through the long tube-like pipes, and that pipes are called blood vessels. So there are actually three type of blood vessels. It is about arteries and then about capillaries and then veins, right? So first we are starting with arteries. So talking about arteries, it carries oxygen-rich blood from the heart to all parts of the body. मतलब ये क्या करती है? Oxygen-rich blood, मतलब कि जो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड होता है, that it is basically वो उसको हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाती है, right? They have thick elastic walls. As we have discussed this, that the blood flow in this artery are rapid and it is at high pressure. Rapid मतलब कि वो बहुत ही जल्दी से जाता है blood flow, and it is high in pressure. So that's why
it is that इनकी जो walls होती है, artery walls are thick elastic walls, right? नेक्स्ट थिंग इज वाल्व्स आर एब्सेंट इन इट, मतलब कि इस आर्टरीज के अंदर कोई भी टाइप के वाल्व्स नहीं होते। The last thing about is like the pulmonary artery is the only artery that carries deoxygenated blood from the heart to lungs. Like talking about pulmonary artery, ये एक ऐसी आर्टरी है कि जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जो होता है उसके अंदर अमाउंट वो बहुत ही लो होता है। तो अगर ऑक्सीजन का अमाउंट लो होता है ब्लड में, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेट ब्लड को हार्ट से लंग तक, राइट, लंग्स तक। सो दिस इज अबाउट आर्टरीज। So now we are talking the second blood vessel, that is about veins. So if we are talking about veins, I have to discuss the thing that whenever you are seeing the skin surface, if they can be seen lying closer to the surface of skin, आपको आपकी स्किन के सरफेस पे आपको वेन्स दिखेगी। किसी की वेन होगी ग्रीनिश कलर की, किसी की होगी ब्लू कलर की। सो यू कैन क्लियरली सी द वेन्स, राइट? सो these veins, they bring deoxygenated or impure blood. As we talked about deoxygenated, उसका मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही कम होता है और आप बोल सकते हो उसको इम्प्योर ब्लड। सो टू द हार्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ लाती है बॉडी के सारे पार्ट्स से, राइट? As we talked, they can be seen lying closer to the surface of the skin as reddish blue lines. आपको आपकी स्किन पे ग्रीनिश और ब्लू कलर्स की लाइन दिखेगी। They have thinner walls as compared to arteries. So we know that arteries के जो भी arteries है उसमें ब्लड का फ्लो बहुत ही रैपिड होता है और वो बहुत ही हाई प्रेशर में होता है, इसकी वजह से उसकी वॉल थिक होती है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेन्स, दे आर थिनर एज compared to arteries. The thing is that we know that arteries don't have any kind of valves, but veins have valves. They have valves to allow flow of blood in one direction only. इनके पास valves है, but इनका क्या है कि वो blood के flow को सिर्फ एक ही direction में जाने देते हैं, right? Talking about pulmonary vein. Pulmonary vein is only vein that carries oxygenated blood from lungs to the heart. पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, मतलब कि प्योर ब्लड कैरी करती है लंग से हार्ट। सो दिस इज इट अबाउट वेन्स। सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कैपिलरीज, दे आर वेरी थिन वॉल्ड एंड वो क्या करती है, दे आर गोइंग टू कनेक्ट आर्टरीज, वो आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती है। The wall of capillaries are so thin that the diffusion of gases and chemical substance takes place very easily. इसकी जो wall है वो इतनी thin है that gases also exchange their diffusions and chemicals जो substance है उनका diffusion भी हो सकता है यहाँ पे, right? So capillary helps to distribute oxygenated blood from arteries to organs. अब हम बात करें कि कैपिलरीज क्या करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजनेटेड मतलब कि प्योर ब्लड को। सो दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट प्योर ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू द ऑर्गन, मतलब कि आर्टरीज से ऑर्गन की तरफ वो प्योर ब्लड को पहुंचाती है। एंड इन द अदर हैंड इट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू वेन्स। और अब ये क्या करती है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या इस कहाँ से पहुंचाती है, सारे ऑर्गन से वेन तक पहुंचाती है, राइट? सो दिस इज द रोल ऑफ कैपिलरी and it is going to connect the vein and artery. So this is it about all the blood vessels. So in the next session we are going to discuss about heart and we are going to discuss about blood, right?